Hello students, this is Priyanka Bansal from SKM Public School. Students, today we are going to revise chapter number 6, that is Where in the World. Okay, this chapter will come in your pre-midterm 2. Chapter number 4, 5 and 6 will come in your pre-midterm 2, and today we are revising the chapter that is Where in the World. Okay, so part A is related to the ticking the correct answer. Okay, first question is, in which city would you find La Rive Gauche, the southern bank of the river Seine? Okay, and the right answer will be Paris. Okay, in which city in Paris we will find the La Rive Gauche, the southern bank of the river Seine? Okay, so the right answer is Paris. Next question is, which Indonesian city was originally named Batavia? ठीक है, हमें क्या है बताना है कि कौन सी रिवर का नेम ओरिजिनल, मतलब जब इसकी रीज़न फाइंड आउट किया गया था, विच सिटी वाज नेम्ड बटाविया, एंड द आंसर इज जकार्ता. ओके, जकार्ता इज ए इंडोनेशियन सिटी and its original name was Batavia. Means in the initial stage its name was Batavia and now it is known as Jakarta. Next is, what is the Latin name of Switzerland? Okay, we have to tell the Latin name of Switzerland, and the Latin name of Switzerland is Helvetica. Okay, what is the Latin name? That is Helvetica. This chapter we have completed earlier. Now we are revising this chapter from the point of view of exams. Okay, exams में आएगा, that's why we are revising this. Next is, what is the name of सिटाडेल ऑफ मॉस्को? ठीक है, क्या नेम है उसका? डैट इज क्रेमलिन. वट इज द नेम ऑफ सिटाडेल ऑफ मॉस्को? डैट इज क्रेमलिन. विच सिटी इज वेल नोन फॉर इट्स कार्निवल? मतलब अपने त्योहारों के लिए, मेन फंक्शंस के लिए विच सिटी इज वेल नोन? डैट इज रियो डे जनेरियो. ओके, विच सिटी इज नोन फॉर इट्स कार्निवल्स? डैट इज रियो डे जनेरियो. ओके, next is, in which country will you find the river Shannon? And this is the longest river. It is flowing about 161 miles. Okay, or approximately we can say that it is 259 in kilometers. Okay, and that is Ireland. In which country that river Shannon is find? That is in Ireland. Next is, in which country is the greeting नी हाउ मा यूज्ड? मतलब नी हाउ मा का यूज्ड है यू ओके और गुड, मतलब आप अच्छे हैं, आप कैसे हैं, जैसे अपने पूछते हैं ना. नी हाउ मा इज यूज्ड फॉर आस्किंग यू ओके और गुड. मतलब आप पूछ रहे हैं कि आर यू ओके, फॉर डैट वी डैट इन चाइना दे से नी हाउ मा. कहाँ पे कहते हैं? इन चाइना. ओके, Bistia and Misoi are the traditional food dishes of which country? मतलब these are the two traditional foods, Bistia and Misoi, and this is the traditional food of, these foods are of Morocco. Okay, these foods are of Morocco. Next is, in which country will you find the river Swan? ठीक है, river Swan कौन सी country के अंदर है? That is found in Australia. Okay, in which country? Yes, in which country river Swan? That is in Australia. Okay, next is, which city in Chile was founded by Pizarro and stretches between the Pacific Ocean and the Andes of mountains, and this is Lima. Okay, which city in Chile was founded? This city is Lima. Lima was founded by Pizarro. Who has founded the Lima? That is founded by Pizarro and stretches between the Pacific Ocean and the Andes mountains. Okay, next is, in which city is the famous Prado Museum located? Okay, this is the museum. See the picture of this museum. This is the picture of museum, and in which city it is founded or located? It is located in Madrid. Okay, ये कहाँ पे है? Prado Museum is in Madrid. Next is, which city is the capital of Bulgaria? Okay, capital of Bulgaria is Sofia. Sofia is the capital of Bulgaria. So we have completed part A. Now we will discuss the part B of this chapter. What is the part B? Identify these amazing architectural
marvels from around the world. Fill in the blanks by picking up your answer from the help box. Okay, help box is given to us. Okay, this is for the help, that which words, or we can write the right answers or right spellings. Okay, so first question is, formerly known as the Beijing National Stadium dash is the famous because of its unique shape. It was made for the 2008 Summer Olympic Games and its cost was in dollars 423 million to construct. Okay, and this is bird's nest. See this picture. ठीक है, ये देखो घोंसले की तरह है ना, ये उलझा हुआ स्टेडियम. ओके, इसकी शेप क्या है, बर्ड्स नेस्ट की तरह है. ठीक है, ये क्या है, बर्ड्स नेस्ट क्या है, इट इज़ द बीजिंग नेशनल स्टेडियम. बीजिंग का ये क्या है, नेशनल स्टेडियम है. ओके, और ये किस शेप में है, बर्ड्स नेस्ट की शेप में है. ओके, और इसकी कॉस्ट कितनी थी, डॉलर 423 मिलियन. ओके, नेक्स्ट इज द डैश elevator can carry 50 tourists up to a height of 1070 feet, built along a cliff in China's Hunan province. It is the world's tallest outdoor elevator and the name of this elevator, मतलब ये क्या है, एक साथ एक 1070 फीट तक की हाइट तक कितने टूरिस्ट को ले जाता है, ये कितने पर्सन्स को लेके जा सकते हैं, 50 पर्सन्स को. एंड दिस इज द बेलोंग एलिवेटर. इस एलिवेटर का क्या नाम है, द बेलोंग एलिवेटर, विच कैन कैरी 50 पर्सन्स अप टू ए हाइट ऑफ 1070 फीट. ओके, द डैश इज द टॉलेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड with its highest mast at a height of 1125 feet. It is considered to be the one of the greatest engineer feats of all time. तो ये क्या है, this is the Milao Viaduct. Okay, this is the Milao Viaduct. It is the tallest bridge in the world. ये देखो इधर क्या है, ये ब्रिज बना हुआ है, इट इज़ द टॉलेस्ट, मतलब सबसे लंबा ब्रिज है ये. ओके, और इसकी हाइट कितनी है, इट इज़ 1125 फीट. ओके, हाइट ऑफ दिस ब्रिज इज़ 1125. ठीक है, तो देखो बेटा, ये क्वेश्चंस सिर्फ यही नहीं है, इससे हो सकता है डेट वी कैन चेंज दिस अप टू डेट डैश फीट, मतलब कितनी हाइट है. इफ़ वी आस्क दैट द व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दैट अप टू विच हाइट द बायलॉग एलिवेटर कैन कैरी द पर्सन्स, द आंसर विल बी 1070. ओके, सो this is the Milao Viaduct. It is the tallest bridge and the height of this bridge is 1125 feet. Okay, next is one of the London's most recognizable landmarks. The dash is a cylindrical building. Despite the shape of its curved exterior, there is only one piece of covered glass in the entire structure. देखो क्या है, it is इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. ओके, इट इज़ इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म, और इसके अंदर क्या है, वन पीस ऑफ ग्लास के साथ ही इसको पूरा कवर्ड किया गया है. एंड दिस इज़ द गर्किन. ओके, दिस इज़ द गर्किन, दिस इज़ ए सिलेंड्रिकल बिल्डिंग. ओके, एंड वेयर इट इज़ इन लंडन. The world's tallest circular building, the dash is located on the banks of the Pearl River in Guangzhou, चाइना. ठीक है, दिस डिज़ाइन बाय जोसेफ डी पैस्कल. इट इज़ ए लिटल ओवर 450 टॉल 50 फीट टॉल एंड इट ऑफन कॉल्ड द डोनेट बिल्डिंग. ठीक है, ये क्या है, डोनेट की शेप में बने हुए सी, एंड इट इज़ द लकी कॉइन. ठीक है, ये कॉइन की तरह है देखो, एंड इट इज़ इन द शेप ऑफ डोनेट. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, डोनेट बिल्डिंग. एंड द नेम इज़ that the world's tallest circular building, that is the lucky coin. Okay, this is the lucky coin which is located in the banks of Pearl River, और जो कहाँ पे है, चाइना के अंदर. next is formerly known as the London Bridge Tower. The dash is a 72 floor glass tower that looks like a transparent pyramid. देखो एक पिरामिड की शेप में है और इसका ट्रांसपेरेंट कलर है. ठीक है, जो आर पार हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मीन्स कि आर पार देखा जा सकता है. विद ए टोटल हाइट ऑफ 1016 फीट, इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द यूके एंड द नेम ऑफ दिस इज द शार्ड. ओके, सो
Part C and D we will discuss tomorrow. Okay. Today we have discussed chapter number 6, part A, tick the correct answers, and part B, that is fill-ups. Okay. So revise this topic and complete this in your book if you haven't completed. Till that, stay home, stay safe. Thank you.